Dear all participants, I welcome to all of you for this our 13th sessions of Museums in Uttar Pradesh. आज का हमारा ये सेशन जो है वो म्यूजियम्स इन उत्तर प्रदेश के बारे में होने वाला है और आज के हमारे जो व्याख्याता है मिस्टर मोहन रावत जी, मैं उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ और मैं पहला उनका बारे में परिचय देना चाहूँगा। मोहन रावत जी जो है उन्होंने अपना ग्रेजुएशन हिस्ट्री में दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पूरा किया। उसके बाद उन्होंने अपना मास्टर्स जो है वो स्पेशलाइजेशन इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्काइव्स उसमें हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पूरा किया। फिर उसके बाद उन्होंने 4 बार नेट एग्जाम क्वालिफाइड किया है, उसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड भी उनको प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने और एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया फोकलोर एंड कल्चरल स्टडीज फ्रॉम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और उसके बाद उन्होंने टेंजिबल थिंग्स ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, वो भी उन्होंने कंप्लीट किया। उन्होंने कई सारे जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं जिसमें गोदरेज आर्काइव्स मुंबई से, फिर उसके बाद मिस्टर अलका जी उनका फैमिली आर्काइव जो कलेक्शन है उसके बारे में, फिर उसके बाद मिस्टर इब्राहिम अलका जी थिएटर लेगेसी, then opening lines and exhibition on the artworks of Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan award laureates, so Mr. Ibrahim Alkazi. Then he works for the Anand Gupte's collection for the digitization, cataloging and accessioning of the theatre journalist Anand Gupte's collection. Then he started work as an archivist for this Alkazi Foundation for the Arts, New Delhi. He got many certificates and then he participated in many conferences and presented research papers also. He have various types of skills, digital technology, traditional के साथ साथ यानी हम जिसे आर्काइवल कलेक्शन जो फिजिकल वर्क करना है उसके साथ साथ जो डिजिटल वर्क भी करना है, तो दोनों तरह से तो उनका दोनों में मास्टरी है। So I welcome to such person here with us and I request to Rawat ji please unmute yourself and please start this our today's session. Rawat ji आप unmute कीजिए। मोहन रावत जी, yes. Yes. Thank you. Yes sir, yes. Thank you so much. A wonderful introduction. वॉइस क्लियर है सर मेरी? Yes, it's clear. Okay. Thank you so much, बोबड़े सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा परिचय देने के लिए। क्या डिस्प्ले आपको दिख रही है? Yes, yes. मैं अपने इस सेशन की शुरुआत आपको धन्यवाद देकर ही करना चाहूंगा कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया एंड आप जो कर रहे हैं बहुत सुंदर है वो काम और मैं आशा करता हूं और शुभकामनाएं आपको देता हूं कि आगे भी आप इस तरीके से ये कंडक्ट करते रहेंगे और आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन ऑन म्यूजियम्स ऑफ उत्तर प्रदेश। दिस इज not a very detailed one, but this is a very general understanding of museums and their profiles in Uttar Pradesh. I have taken few of the major museums in Uttar Pradesh. So shall we begin? Yes, yeah. Okay, thank you. So I have started with a very general definition of museum. It's from International Council of Museums. So what is a museum? For general audience, I have kept it very general in the approach. So for a very general understanding, we can say that a museum is a non-profit permanent institution in the service of society and its development, open to public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purpose of education. तो हम कह सकते हैं कि म्यूजियम एक ऐसा संस्थान है, आई विल ट्राई टू कीप इट इन बोथ द लैंग्वेजेस फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर हिंदी मीडियम पीपल आल्सो। सो हम कह सकते हैं कि जो म्यूजियम है, जो संग्रहालय है, वो एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है जो कि समाज की सेवा के लिए और उसके विकास के लिए कार्यरत रहता है, जो लोगों के लिए खुला रहता है और जो कंजर्व करता है, चीजों को संरक्षित करता है, उसके ऊपर शोध करता है, उसके बारे में एक डायलॉग क्रिएट करता है
और जो भी टेंजिबल इंटेंजिबल कभी कभी जो चीजें हमें मिलती हैं हमारे पास से रिलेटेड, उसको एग्जीबिशंस के द्वारा लोगों तक पहुंचाता है, उन्हें एजुकेट करता है एंड अवेयर करता है अबाउट अवर कलेक्टिव हेरिटेज। सो ये एक म्यूजियम्स की कई सारी जो परिभाषाएं होती हैं, देयर आर सो मेनी डिफिनेशंस ऑफ म्यूजियम्स। इट इज वन ऑफ दी विच आई फाइंड कि हाँ, ये एक उसकी जो मूल बात है उसको करता है। सो नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो ये दिस इज अ वेरी ब्रीफ नोट जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि हाउ म्यूजियम हैज स्टार्टेड इन इंडिया। सो दिस इज म्यूजियम्स इन इंडिया इन द मॉडर्न seems to be a colonial legacy. However, many scholars suggest that there are many references in ancient texts which connote or have some affiliation to these kinds of institutions. Antiquarians among the British officials, intrigued by the diversity of artifacts, epigraphs, coins, tools, sculptures that the new colony had offered. Archaeological excavations and the subsequent findings yielded many unique items. These discoveries were very crucial to know the land and strengthen the British rule in India. Also, people who were interested in Indology, that is the study of Indian history and culture and a subset of South Asian studies, was committed to protect the rare antiquities for research and compare the two mingling civilizations, that is East and West. Art connoisseurs, antiquarians, and Indologists among the British people were instrumental in laying the foundation of museums in India. After independence, the museum and museology were to only grow richer. So, जो भारत में एक संग्रहालय का एक जो संस्थानीकरण है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, उसकी जो शुरुआत है हमें कॉलोनियल टाइम से मिलती है, यानी कि उपनिवेश जब यहाँ पर बने हमारे यहाँ। लेकिन कई ऐसे जो हैं इतिहासकार, स्कॉलर्स हैं, जिनका मानना है कि जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें कई सारी चीजों के बारे में ऐसे शब्द, ऐसी चीजों का मेंशन मिलता है जो इस तरह के जो संस्थान थे उनके होने के ऊपर एक अपना एक इंगित करते हैं उस चीज को। तो एंटिक्वेरियंस से मतलब है कि जो लोग बहुत ही एक डिस्टिंक्ट और रेयर चीजों को कलेक्ट करने की उनकी जिनकी हॉबी होती है और उसको वो उसके द्वारा अपनी जीविका भी अर्जित करना चाहते हैं, थ्रू बेचते हैं, यहाँ से लेकर के जाते हैं। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने जब यहाँ पे अपना उनका जब कल्चरल एनकाउंटर होता है यहाँ, तो उनको इतनी सारी डाइवर्सिफाइड चीजें मिलती हैं, कॉइन्स मिल रहे हैं, अभिलेख मिल रहे हैं, औजार मिल रहे हैं पुराने, तो उन चीजों का उन्होंने एक कलेक्शंस बनाना शुरू किया और कालांतर में ये महसूस किया गया कि वी हैव टू हैव इंस्टीट्यूशन, ताकि उनको एक रखा जा सके। और धीरे धीरे करके उसी गति से चीजें बढ़ती गई और जब हम आजाद होते उसके बाद फिर हमारे पास इतना सारा कलेक्शन हो चुका था। हालांकि बहुत सारी चीजें आज हमारे पास यहाँ नहीं होंगी क्योंकि वो उसी प्रोसेस में कहीं ना कहीं खो गई होंगी, लेकिन उसकी जो शुरुआत है, उसका एक जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, वो आप उसमें कह सकते हैं कि वहां से रहा होगा। अब चलते हैं। सो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ म्यूजियम्स, इन अ वेरी नटशेल, वी टू preserve, conserve, safeguard, interpret the primary evidence of humankind and the environment. सबसे पहला काम तो है संरक्षण करना, उसको बचाना, उसको फ्यूचर पोस्टेरिटी के लिए उसको सहेज के रखना, ये उसका काम है। साथ ही टू क्रिएट अवेयरनेस एंड सेंसिटाइज द मासेस अबाउट कल्चरल हेरिटेज। दूसरा, आम लोगों को हमारे सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में एक अवेयर करना, उसके प्रति सचेत करना, उसको उससे भी ज्यादा। इसके साथ होता है कि वो रिसर्च को फैसिलिटेट करते हैं, साथ ही रिपोर्ट्स भी वो पीरियोडिकली पब्लिश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ म्यूजियम्स, वेरी ब्रीफली हम कह सकते हैं कि देयर आर मैनी काइंड ऑफ म्यूजियम्स। आपको आवाज आ रही है? हेलो, हेलो। जी सर, आ रही है। ओके ओके। हाँ, तो म्यूजियम्स के जो प्रकार हैं, कितने तरह के म्यूजियम्स होते हैं? होने को तो अभी
बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन मेनली हम कह सकते हैं आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे पुरातत्व से प्राप्त जो उत्खनन होते हैं, एक्सकेवेशंस होते हैं, एक्सप्लोरेशंस होते हैं, उनको सहेजने वाले। आर्ट म्यूजियम्स जिसमें पेंटिंग्स होंगी और उससे रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड चीजें होंगी। बॉटनिकल गार्डन्स होंगे, चिल्ड्रंस म्यूजियम्स होंगे, हिस्टोरिक हाउसेज होंगे जो अब म्यूजियम्स में उनको बदल दिया गया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। साइंस म्यूजियम्स एंड प्लानिटेरियम्स होंगे, जैसे नेहरू प्लानिटेरियम हो गया। जूज एंड एक्वेरिया, जल जीवों का और जानवरों का एक जो होता है, वो भी एक तरीके से म्यूजियम होता है, जहां हम जाते हैं, उनको विटनेस करते हैं। फिर वर्चुअल म्यूजियम्स होते हैं, ये अभी काफी ऑनलाइन एंड वर्चुअल म्यूजियम्स, एज यू ऑल ऑफ नो, ये काफी चल रहा है। तो लोग म्यूजियम्स को ऑनलाइन भी एग्जीबिशंस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स का। तो इस तरीके से इतने तरह के हम म्यूजियम्स देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते होंगे और होते हैं। आगे चलते हैं। अब उत्तर प्रदेश के बारे में ये थोड़ा सा मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। So Uttar Pradesh, previously known United Province, like every other state, holds a very special place in history of Indian civilization. It has a continued history of settlements from prehistoric sites to the present. It is closely associated with Buddhist traditions, and many Buddhist sites are located in the state. Apart from a number of epigraphic and numismatic evidence from the Mauryan and Gupta empires, it has also been in the past the center of empires such as Kushanas and Mughals. The fine specimen of Mathura art school and grandeur of Mughal architecture heritage find no parallel. In the freedom struggle movement, UP was to play a significant role, as it is the place from where the mutiny of 1857 spread, that is from Meerut, and shook the British roots in India. Many of the freedom fighters were from the state. This historical background is important to understand the need for museums and preserving our shared culture and heritage for posterity. Without commenting on the upkeep of the museums and cultural sites, we should appreciate the fact that somehow we managed to treasure the precious and remarkably crucial traces of our past. The presence of a number of rich museums in the state is a testimony to the fact that Uttar Pradesh has yielded diverse artifacts importance. So एक व्यूअर्स है कि उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ हमारे को प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके अभी तक एक सेटलमेंट की कंटिन्यूटी है, एक बहुत फर्टाइल लैंड है। तो यहाँ पे सेटलमेंट्स का इतिहास भी काफी पुराना है। बहुत साइट्स कई सारी हैं, सारनाथ हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारे बुद्धिस्ट साइट्स लोकेटेड। अपार्ट यहाँ से कई सारे हमें अभिलेख, कॉइन्स प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जो कि मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड है। और कुशाना एंड मुगल्स की ये सेंटर रहा है, आगरा और ये थोड़ा कुशानास का। द फाइन स्पेसिमेन ऑफ मथुरा आर्ट, अब मथुरा आर्ट स्कूल के जो सुंदर स्कल्पचर्स और मूर्तियां और बहुत सारी चीजें जो हमें मिलती हैं, वो कहीं भी और देखने को नहीं मिलती। उसी तरीके से आप ताजमहल को ले लीजिए या फतेहपुर सीकरी है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी लेगेसीज को यहाँ पर अभी भी रखे हुए हैं। ऐसे ही सिमिलरली फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जब होता है तो यूपी से कई सारे नेता जाते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय पटल पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ पे 1857 में यहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से जो 1857 की क्रांति हमारी। तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो म्यूजियम्स हैं, म्यूजियम्स जनरल हर जगह जो है, बहुत जरूरी नहीं है कि देश के अगर कुछ चुने म्यूजियम्स को हम कमेंट ना भी करें, तब भी हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक हम चीजों को सही रख पाए और कम से कम प्रयास उस पर कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आगे भी हम ऐसे करते रहेंगे और बचा के रखें। तो आगे चलते हैं। अच्छा, built in this presentation for a very general thing. These are the 18. There are many, but I found ये सारे के सारे जो म्यूजियम्स हैं वो एक स्पेशल मेंशन डिजर्व करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे म्यूजियम लेवल पर, स्टेट लेवल पर बहुत सारे म्यूजियम्स हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख म्यूजियम्स है, क्योंकि बहुत बड़ा फिर प्रेजेंटेशन हो जाएगा एंड इट्स नॉट, इट शुड बी
crisp and short. Thank you. So let us begin with the Mathura Museum. The reason why I have chosen this museum is this is the most richest in terms of Buddhist, Jain and also Hindu traditions. यहाँ से हमें हर तरह के artifacts मिलते हैं. So government museum was established in the year 1874 by late F.S. Groves, the then collector of Mathura. It was then known as Curzon Museum of Archaeology, which later came to be known as Archaeology Museum. Mathura, it was further changed to Government Museum Mathura. The museum aims to present a broad view of the early Mathura or bridge culture through its collection of pottery, sculptures, paintings, coins, and other antiquities. The rich treasure of antiquarian values unearthed by Cunningham, Groves, Furey, and others. Regional and character, its scope was limited primarily to archaeological finds from Mathura and adjoining area. The vast collection includes sand, stone sculptures, bas reliefs, architectural fragments, inscriptions, etc. Various faiths and creeds, belonging to various faiths and creeds. Beside a good number of coins, there are thousands of terracottas, inscribed bricks, pottery pieces, clay seals, bronze objects and paintings, etc., mostly hailing from Mathura region. The museum has the richest and by far the most important collection of Mathura school of sculptures of 3rd century BC to 12th century AD, which attained the pinnacle of glory during the reign of great Kushana and Gupta empires. The museum serves as a valuable reference for the study of Indian art and iconography. तो मथुरा जो है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, वो इंडिजिनियसली डेवलप्ड एक आर्ट फॉर्म है. जैसे गंधार आर्ट है, मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल है, जहां पे आपको बुद्धिस्ट, जैन और हिंदुओं से रिलेटेड भी बहुत सारी मूर्तियां और उनके शिल्प आपको देखने को मिल सकते हैं. तो यहाँ पे मथुरा का जो म्यूजियम है बहुत ही रिच है और इसमें हमें क्या मिलता है, गुड नंबर ऑफ कॉइन्स मिलते हैं, स्कल्पचर्स मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं, ब्रॉन्ज बहुत सारा है. अभी मैं आपको आगे वो दिखाता हूँ. अच्छा, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के मथुरा आर्ट के बारे में एक छोटा सा ये नोट भी है. मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट रीच्ड इट्स पिनेकल ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ दिस पीरियड इज द anthropomorphic images of Buddha, who was hitherto represented by certain symbols. Before this, जो बुद्धा होते थे वो कई सारे फॉर्म्स में होते थे. लोटस के फॉर्म में है, हॉर्स में है, या फिर एक व्हील के उसमें है. उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता था, बट मथुरा स्कूल से उनको एक पर्सोनिफाई किया जाने लगा. द आर्टिस्ट ऑफ मथुरा एंड गंधार वर pioneering images of the Buddha. Images of Jain Tirthankars and Hindu deities were also made in Mathura. Generally, all these initial images were huge in size. Their excellent specimens are still preserved in the museums at Lucknow, Varanasi, Allahabad, and Mathura. Colossal images in seated or standing posture of Kushana, Emperor Vim Kadaphises, and Kanishka and Shaka rural Chastan have also been found in Math and Mathura district. तो इस सब के अलावा माट एक जगह है मथुरा के पास ही. इट्स अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 किलोमीटर ही की रेंज में होगा. वहां से हमें इनके जो कुशाना रूलर्स हैं और चस्टन जो रूलर्स हैं उनके भी कुछ colossal images मिलती हैं. They are stated to have been installed in Devakul, probably a place of worship of ancestors. There is no doubt that Mathura was a center of manufacturing of stone images, sculptures. During the Kushana period, these images had a great demand in other parts of the country. Scenes depicted on stone pillars found in Bhuteshwar and other places in Mathura district present glimpse of contemporary life, including dresses, ornaments, museum, means of entertainment, arms, household furniture, stone carvings of intoxicated groups of people that have been found. Speak about foreign Hellenistic influence on the school of art. Considerably, construction activities have come to notice in Sarnath, also in Kushana period. Ruins of several monasteries, temples, and stupa of the period lie catered there even today. तो मथुरा और उसके जो आसपास की जो भूतेश्वर है, माठ है, सौंक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो मथुरा के आसपास से कुशाना पीरियड के और चस्टन जो क्षत्रपा थे उनके टाइम से बहुत सारी जो उनके स्कल्पचर्स हैं और उनके जो भी आर्टिफैक्ट्स, ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा वहां से हमें प्राप्त होते हैं. तो ये स्पेसिमेन आप वहां देख सकते हैं. ये कुछ उसके बारे में वहां जो मथुरा में जो कलेक्शन है, वहां के जो एग्जिबिट्स हैं, ये आप देख सकते हैं कि आर्काइक मदर गॉडेस हैं, प्री स्टोरी से बिलोंग करती है. फिर ये एंथ्रोमॉर्फिक कॉपर फिगर, यक्षा,
एंड मुद्रा, ये मुद्गर पानी यक्ष, बोधिसत्व, जैन भी हैं, और ऐसे कैसे आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा देर यहाँ रुकता हूँ, आप देख सकते हैं इस पे। तो वो डाइवर्सिफाई एक कलेक्शन है मथुरा म्यूजियम में, जो आप देख सकते हैं वहां। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ another important museum in Uttar Pradesh is Sarnath Museum, of course. So amid natural surroundings lies the archaeological museum, which exhibits the Buddhist cultural belt recovered from the site of Lord Buddha's first sermon at Deer Park, Mrigdev in Sarnath. As the findings are mostly from Buddhist monasteries or vihar, the plan of building was designed by James Ransom on the pattern of a sangraham or a vihar. The noble idea was conceived by Sir John Marshall, the then Director General of Archaeology, in view of Buddhist character of antiquities. The construction of museum building began in 1904 and was completed in 1910. The central hall is a man chapel, galleries as monastic cells, and veranda occurring as in front of cells in a monastery. The whole building is made of sandstone with flat roof. तो ये जो है colonial officials जो थे, उन्होंने इसको एक तरीके से कंस्ट्रक्ट किया उन थीम पे, जो संग्राम विहार जिसे हम बोलते हैं मोनेस्ट्री, उसकी एक तरह से उसको एक बनाया। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम सारनाथ इज द ओल्डेस्ट साइट म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे of India in real sense. In order to preserve and display the antiquities found from the site during the excavations, a decision was taken in 1905 by the government to construct a site museum adjacent to the excavated area at Sarnath. तो उन्होंने यहाँ पे एक साइट म्यूजियम को भी डेवलप किया बराबर में ही 1905 में. It was due initiative of Sir John Marshall, the then Director General of Archaeology, that this museum was created. तो Sir John Marshall जिनकल स्टडीज में बहुत ही बड़ा योगदान है, जिन्होंने कई सारी जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हड़प्पा की, उनकी खुदाई जो की है, उन्हीं को ये श्रेय आता है कि उन्होंने म्यूजियम्स में भी अपना एक योगदान दिया. The plans were prepared by Mr. James Ransom, the then consulting architect of the Government of India. Building was completed in 1910 to house, display and study the antiquities in the right perspective. The building forms half of a monastery in plan. There are 5 galleries and 2 verandas in the museum to display the antiquities ranging time from 3rd BC to 12th century. तो सारनाथ में 3rd century BC से 12th century AD तक के हमें जो है आर्टिफैक्ट्स एंड अदर चीजें वहां पे मूर्तियां वगैरह मिलती हैं. तो यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट, तो जैसा सब लोग जानते हैं कि जो लायन कैपिटल ऑफ, जो हमारा एम्ब्लेम ऑफ इंडिया है, वो सारनाथ से ही हमें प्राप्त होता है. उसके साथ ही आप देख सकते हैं बुद्धा है, स्टैंडिंग इंस्क्राइब्ड गिफ्ट ऑफ अभय मीरा, बोधिसत्व गुप्ता पीरियड से धर्मचक्र पवर्तन एंड ये चीजें, और ये कॉलोसल इमेजेस भी हैं साथ में जो देख सकते हैं. और मथुरा में ही एक और इम्पोर्टेंट म्यूजियम है, स्टेट जैन म्यूजियम मथुरा. ये द जैन संग्रहालय, द फर्स्ट म्यूजियम ऑफ काइंड इन उत्तर प्रदेश, सिचुएटेड एट मथुरा, फाउंडेड इन 2002. The structure, which was discovered in 1843, was converted into a museum in 1874 by the then district magistrate F.S. Groves, earlier known as the Karjan Archaeological Museum. अच्छा, ये जो है मथुरा में स्टेट जैन म्यूजियम, और जो वो पहले वाला म्यूजियम था वो पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है. It will now officially be called the Jain Sangrahalaya, as it primarily houses artifacts and manuscripts from the history of Jainism. Sculptures as huge as 12 to 13 foot are exhibited at the museum in Mathura. Big statues of Ayagapatta, tablets of homage, are also installed at the museum. Bronze statues of Rishabhnath, Parshnath, Mahavir also displayed at the Mathura Museum. As a token of participation in the inauguration of the Mathura Museum, the state election for temporary display at the Jain Museum in Mathura, the manuscripts are loose leaves of script which will be framed and then displayed at Mathura Museum. The manuscripts relate to the Granth of the Jains and the 2 sutras of manuscripts and Uttaradan Sutra. The colorful scripts have a decorative border with floral meanders, geometrical patterns and ornamental motifs. Some panels have charming depiction of squirrels and birds in the
foliage of creepers, as well as dancing women and musicians and wrestlers. Lastly, there is also procession of animals that is depicted on the manuscripts. The border invited direct comparison with those in the manuscripts of the Uttar Dhyan Sutra and Kalp Sutra. तो ये उसके बारे में है, स्टेट जैन म्यूजियम के बारे में, जो यहाँ पे म्यूजियम्स के बीच में कोलैबोरेशन भी हम देख सकते हैं कि लखनऊ म्यूजियम भी वहां पे कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स को भेज रहा है डिस्प्ले करने के लिए, सिंस जो मथुरा के जो म्यूजियम्स हैं वो काफी ज्यादा विजिटेड होते हैं, बहुत लोग वहां जाना पसंद करते हैं ड्यू टू इट्स वेरी रिच एंड एंटीक कलेक्शंस। तो जैन म्यूजियम से ये कुछ जो इमेजेस मुझे मिली हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये बुद्धा हैं जैन, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड। पिपरवा म्यूजियम सिद्धार्थ नगर। पिपरवा जो म्यूजियम है अभी निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बारे में अभी ऑफिशियल साइट पे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट अगर यहाँ पे एक म्यूजियम डेवलप होता है, इट विल बी वेरी ग्रेट टू सी। Piparwa and its surrounding significance to Buddhist religion. It is one of the sites that is linked directly to the early life of Buddha, as it is thought to be the location of the ancient city of Kapilvastu. यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि पिपराइट है, उसको बहुत से स्कॉलर्स कपिलवस्तु के रूप में खोजना चाहते हैं। According to Pali texts and ancient Buddhist traditions, Piparwa is also the site of one of the 8 stupas constructed over the remains of Lord Buddha. Piparwa is to be found about 9 kilometers north of Birdpur, close to the border that separates India from Nepal. A metal road runs from Piparwa to the district headquarters of Lucknow. Buddhist literature often names Kapilvastu as a wonderful place and the native towns of Buddha. It was also the capital of his father, who was a chief of Shakyas. The clan were priests, landowners, warriors, and knights. Kapilvastu was located between the river Rapti and the Nepalese foothills in today's district of Siddharth Nagar. पिपरवा सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट में है, राप्ती एंड राप्ती नदी के किनारे और नेपालीज फुटहिल्स में। The Shakyas probably owed allegiance to Prasenjit during 6th century BC. हालांकि ये हिस्टोरिकल कुछ इसमें बैकग्राउंड दिया हुआ है, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि पिपरवा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो अभी आप आगे देखेंगे इसके जो एग्जिबिट्स हैं। However, it seems that the Shakya had never been extinct from the land because they had received a share of body relics of Buddha. But it is very likely that the tribe never flourished after. It is also attested from Fayan description, who found it like a desert, with neither king nor people except for a congregation of priests and about 10 families of lay people. The ancient Saint Piparwa have yielded one of the earliest relic caskets with a pre-modern Brahmi inscription, which describe the erection of stupa over the corporeal relics of Shakyamuni Buddha. Stupa and monasteries are among several structures located around the main stupa. Besides that, there are two more stupa. There are two more localities identified as Buddhist settlements: Gavaria, Salagar, located on the southwest and northeast of Piparwa respectively. An archaeological museum is under construction at Piparwa to showcase the yielded by the site. पिपरवा म्यूजियम से जो मिलते हैं, ये जो उनके कॉर्पोरल रिमेन्स हैं बुद्धा के, ये जो बीच में आप देख रहे हैं, इसमें साथ में ये इंस्क्रिप्शन है ऑन द राइट, फिर ये कुछ यूटेंसिल्स हैं वो आप देख सकते हैं ये, और ये उसका स्ट्रक्चर है, और ये प्लान उसका देख सकते हैं आप गवरिया से, और ये ऊपर मेन स्तूपा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब गवर्नमेंट बौद्ध म्यूजियम गोरखपुर। Government Bauddh Museum Gorakhpur harbor antiquities collected from eastern region of Uttar Pradesh, which has been the ancient leading center of spiritual and mystic movements having its root in the Shraman and Vedic traditions. The legacy of the above philosophies imbibed in the preaching of Tirthankar Mahavir, Lord Buddha, Guru Goraknath and Kabir. The area abounds in historical and archaeological sites such as Laura Dev, Ramnagar Ghat, Lumbini, Devda, Kapilvastu, Kopia, Sahagora, Kushinagar, Pawa, and so on, yielding important finds. Government Bauddh Museum Gorakhpur was established in 1987 and it is located in the Ramgarh Tal project area.
about 6 kilometers southeast from the railway and bus station, 1 kilometer southeast from Circuit House, and 1 kilometer east from Planetarium. The visitors can stay in various guest houses, private lodges, and hotels. The museum's main aim is the collection, preservation, documentation, exhibition of the cultural property, and to make them available for educational activities for creating awareness about the glorious past. तो गोरखपुर क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अन्य जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनके साथ ही उनसे घिरा हुआ है, तो यहाँ पे भी एक म्यूजियम जो है गवर्नमेंट बौद्ध म्यूजियम के नाम से जाना जाता है, वो डेवलप किया गया है, जो कि कई सारे पुराने उन चीजों को सहेज के रखने में कार्यरत है। तो ये वहां से कुछ फोटोज हैं, ज्यादा तो उसका प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन कुछ उसमें आप देख सकते हैं। ये म्यूजियम्स के कुछ फोटोज। Buddhist traditions. Another important museum is a Buddhist museum, Kushinagar. Government Bodh Museum is situated at Kushinagar, which is well known all around the world as Mahaparinivar place of Lord Buddha. The Buddha breathed his last at the ripe age of 80 at Kushinagar, and therefore this place has been the center of attraction for tourists and Buddhist pilgrims all over India and abroad. Kushinagar is located about 52 kilometers east from Gorakhpur on National Highway 28 and 35 kilometers north from Devariya, which are also the railway stations of the Northeastern Railway. The visitors can stay in the various guest houses maintained by the temples and monasteries or in private government hotels. Uttar Pradesh is undoubtedly the seat of Buddhism. Buddhism emerged here as a religion and from here spread across the world. Main Buddhist places as with Sarnath, Kapilvastu, Sankhya, Sravasti, Koshambi, Kushinagar are situated here. Kushinara was the ancient name of Kushinagar, which was the capital of Malla clan. It was also one of the 16 Mahajanapadas of ancient India during the period of 6th century BCE. According to Jatakas, in ancient times, Kushinagar was known as Kushavati. In Ramayana, it is mentioned as the city of Kusha, the son of Lord Ram, the king of Ayodhya. Lord Buddha attained Mahaparinivar here at Sal 1 in the ripe age of 80. By the time Kushinagar becomes a place of immense cultural and religious significance, the Mahaparinivar and subsequently erection of stupas on his holy relics are not considered as symbol of mourning, because after enlightenment Buddha also become free from the bondage of body. तो ये उसके बारे में एक background है. The museum organizes, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो ऊपर. The museum organizes various educational and cultural programs as different competition, exhibitions, workshops, lectures, seminars, and film shows, etc. It also coordinates with other institutions to organize educational and cultural programs. मैं थोड़ा रोक देता हूँ, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं. Those who are interested. कुशीनगर म्यूजियम एग्जिबिट्स. कुशीनगर से अनफॉर्चुनेटली इतने ज्यादा फोटोज अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, बट जो भी हैं ये 3 ही मुझे मिले, तो आप यहाँ देख सकते हैं. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूजियम लखनऊ में है. स्टेट म्यूजियम लखनऊ is a prominent museum located in the capital city of Uttar Pradesh, India. The museum is currently located in the Nawab Wajid Ali Shah Zoological Gardens, Banarsi Bagh, Lucknow. The museum was established in 1863 from the collection of Colin Abbott and was given the status of provincial museum before being renamed the State Museum in 1950. The museum began in 1963 with a collection of artifacts that were housed in the building of Choti Chattar Manjil in Kaisar Bagh by the then Commissioner of Lucknow, Colin Abbott. This repository functioned as a municipal institution in its early days until 1883, when it was given the status of provincial museum. The museum was shifted to a larger space in erstwhile Coronation Hall of Nawab of Awadh, Lal Baradari, in June 1884. Special archaeological
section for the museum was established in 1909 in the premises of the old Canning College in Kaisabad. The museum was formally organized in the same year with the Constitution of Management Committee. तो ये उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ दे रखा है. और some important figures who also contributed to the formation of the museum from the colonial period include Mr. A.O. Hume, who was an important member of management committee in 1867. The first superintendent of museum was Emmanuel Bonavia, a surgeon. The first curator of the museum, archaeologist Dr. A. Fure, was appointed on 30th March 1885. Fure expertise and interested in the field of archaeology was reflected in his first contribution to the collection of the museum, excavation at Kankali Mount at Mathura, in 3 consecutive periods, 1888-89, 1889-90, 1890-91. All the excavated antiquities recovered from the site were located to the erstwhile provincial museum. The museum undertook other important excavations, including one at Aichatra, 1891-92, the 1912 at Kashia, and subsequent excavations at Indore, Kheda, Sankisa, Uchgaon, Ashtabhuja. These excavations and subsequent collections from the same contributed to the important archaeological section of the museum. The museum was renamed State Museum in 1950, while an expanded collection that necessitated better organization and a separate space. The museum was eventually shifted to an independent building in Banasi Bagh. The building is located in the middle of the Nawab Wajid Ali Shah Zoological Garden. The Zoological Garden and the museum premises was inaugurated by the Prime Minister Jawaharlal Nehru in 1860. हेलो सर, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुनाई दे रहा है. हेलो, सुनाई दे रहा है. ओके सर. The collection housed in the museum consists of objects from the prehistoric period, Bronze Age, plaster cards of famous figurines from the Indus Valley civilization, as well as a rich collection of numismatics, paintings, manuscripts, and textiles. The museum has a varied collection ranging from archaeological to painting and a rich numismatic collection. These items are housed in specialized galleries based on the type of collection and display a select few objects. The history of the museum is rooted in practices of colonial collecting, with a vast number of archaeological expeditions that had been undertaken by the museum corresponding to the primary collection of the institution. The archaeological gallery therefore becomes an important part of the museum and is highlighted as a result of it being a primary and vast collection. Archaeological galleries containing artifacts and evidences from Bronze Age, Shunga, Kushana, Gupta, Buddhist sculptures, narrative friezes, decapitated images of Bodhisattva, and an inscription bearing Buddhist sculpture from Shravasti. It displays examples of Gandharan art, such as frieze of Buddha giving a sermon and the head of Buddha. Numismatic collection, paintings, war artifacts can be seen. यहाँ पे एक अवध गैलरी भी है. The gallery houses items from the culturally unique phase that had been introduced during the reign of Nawabs in Lucknow. The gallery is a precipitate of a temporary exhibition from 1985 and houses cultural objects from the area produced during the rule of Nawab Asif-ud-Daula and his successor. This section includes Bidri work, objects such as hookah, spittoon, boxes, and plates, gold and silver inlay works, ivory carving, glass work, and samples of chikan, Jamnani work. This section also includes miniature paintings from the Awadh school of oil paintings, etc. that can be seen here. तो स्टेट म्यूजियम एंड लखनऊ से कुछ ये एग्जिबिट्स हैं जो मैंने यहाँ पे डालना जरूरी समझा. आप देख सकते हैं ये. This is Triratna, Naminath is standing position, Buddha, Vishnu, Tirthankara, Anaktila. Wait, next slide. ये वहां पे गन्स का आप देख सकते हैं. ये बाहर से म्यूजियम का. Now the State Museum, Kannauj.
Archaeological Museum of Kannauj have vast variety of clay idols, which proves that at ancient time Kannauj was famous for art and culture like Mathura, Kashi, Kushambi. Right from Maurya age, it was a fully developed locality. The clay models found here shows that it was very progressive district of ancient time. Even historical Chinese visitor Huansang praised this district during his visit in India. As per types of antiquities, we can categorize them into following categories. इसमें ये different categories के इसमें artifacts आपको मिलते हैं. मौर्य, शुंगा, कुशाना, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, हर्षा. ये वहां से कुछ एग्जिबिट्स हैं कन्नौज से. नेक्स्ट देन भारत कला भवन जो कि BHU में है. Founded with a modest collection, the museum has a record of steady growth and its present holding exceeded 1 lakh. The collection includes archaeological materials, paintings, textiles and costumes, decorative art, personal collection, Indian philately, and literary and archival material. Most of its collection are historically important, aesthetically beautiful, and enjoy a certain amount of uniqueness. However, the name and fame of the University Museum justly rests on its priceless collection of Indian paintings. An eminent art historian once declared that the museum possesses one of the greatest collection of miniature paintings. Though the museum targets visitors and university students, alumni, research scholars, and teachers, it also serves as a regional museum and caters to the need of a huge number of lay visitors. ये उसका कलेक्शन का ब्रेकडाउन है. आर्कियोलॉजिकल सेक्शन, न्यूमिस्मेटिक सेक्शन, पेंटिंग, लिटरेरी, टेक्सटाइल, डेकोरेटिव आर्ट, फिलेटली, वुलन, टेक्सटाइल ब्लॉक्स, बनारसी सेक्शन, मिसलेनियस एक्सचेंज. ये आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनकी होल्डिंग्स हैं. Allahabad Museum. Allahabad Museum, located in the picturesque Chandrasekhar Azad Park, Company Bagh, is among the national level museums of India. It is about 3 kilometers from Allahabad railway station and almost equidistant from Prayag and Rambagh railway stations, and about 12 kilometers from Bamroli airport. The beautiful location, large sprawling green lawn and nicely laid out garden has given it a special attraction. It was originally established under the aegis of Allahabad municipality in 1931 with a small collection of model of birds and animals. The museum has a rich and diversified collection of art, antiquities, paintings, sculptures, coins, ceramics, archaeological objects, illustrated manuscripts, formats, decorative art objects, arm and armors, textile, natural history specimen, photographs, prints, and personal collections of pertaining to Gandhi, Nehru, and literary personalities of Allahabad like Sumitra Nandan Pant, Suryakant Tripathi Nirala, Premchand, Mahadevi Verma, etc. The artifacts are displayed in 16 different galleries, including an exhibition named in the memory of A.K. Kumaraswamy Memorial Hall and a central hall where from time to time various contemporary exhibitions on different themes are organized for the rotation of art objects and antiquities from the reserve collection of the museum. ये कुछ exhibits हैं. Sir, are we going too fast or slow? Excuse me? Hello? It's okay, sir. No issue. Okay. So this is these are some exhibits at Allahabad Museum. आप ये देख सकते हैं. Now this Chhatrasal Museum in Bundelkhand. Maharaja Chhatrasal Museum is a museum located in an old palace at Dubhela on the Chhatarpur-Jhansi highway in Chhatarpur district, Madhya Pradesh, India. ये important है. This museum was established in September 1955. I think ये misplaced हो गया. Okay, can we just please ignore it because it is in Madhya Pradesh. It is somehow here. I don't know why. Yes, Panchal Museum, Bareilly. This museum is located in the premise of Mahatma Jyotiba Phule University, Bareilly, maintained by the History Department of the university. Here you can find the objects exhibits from Mahabharat, from Gupta, Maurya, coins, etc. तो ये बरेली है. बरेली में जो पांचाल म्यूजियम है, यहाँ से महाभारत कालीन, मौर्य एंड गुप्ता कालीन सिक्के, मृदभांड, पॉटरी एक्सेट्रा हमें मिलती है. ब्रिक्स आप देख सकते हैं, ये वेरियस काइंड ऑफ ब्रिक्स यहाँ पर है.
थर्ड फोटो में नेक्स्ट साइड, हाँ झांसी. At a distance of 3 kilometers from Jhansi Junction, Rani Jhansi Museum is a museum located inside the fort of Jhansi. It is one of the important museums of Jhansi and also among the must-visit places in Jhansi. Rani Jhansi Museum, or Government Museum, is not only gives an insight into the history and heritage of Jhansi, but also throws light on the history and culture of the Bundelkhand region. Dedicated to Rani Lakshmi Bai of Jhansi, this museum has an exclusive gallery on Rani Lakshmi Bai and is a unique attraction. This section consists of lots of her armory items and photographs depicting her life since childhood. It is also an important source to know about the life and times of Chandela rulers. The Jhansi Museum houses weapons, statues, dressed in photographs that belong to Chandela dynasty. तो ये आप देख सकते हैं कि रानी झांसी का जो म्यूजियम है वो झांसी में है, और ये वहां से कुछ वंडरफुल एग्जिबिट्स आपको और फोटोज और पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी. Then this 1857 Memorial Museum, Lucknow, also known as Residency, its galleries AK showcases the impact of First War of Independence 1857 on the Residency complex. The Residency complex was constructed for the British residents stationed in Awadh as per the treaty signed between Nawab Shujaud-Dowla and British in 1754. ये मैं ऊपर का जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा अभी कम करूंगा क्योंकि फिर बहुत लंबा हो रहा है. The museum has a series of thematically arranged lithographs on display by C.H. Matcham under the name of Siege of Lucknow on 1st October 1858 and the campaign in India by G.F. Atkinson on 1st January 1859, published by London Day and Sons. The lithographers to the Queen. The gallery contains lithographs drawn on the spot at the buildings of the Residency complex as seen before and after 1857 freedom struggle. There are 3 translights on display of the Dilkusha Koti, Rumi Gate, and an aerial view of Bada Imam Bada in Hossainabad. There are also paintings of Wajid Ali Shah, Begum Hazrat Mahal, and Rani Lakshmi Bai, among others, on display. The British Gallery, that is Gallery D, has mounted high relief sculpture of Sir Henry Lawrence, Chief Commissioner of Awadh, and of Miss Susanna Palmer, daughter of Colonel Palmer, both of whom died in that very room in that gallery, hit by bullet shots and cannonball respectively. Gallery E2K houses cannonballs, musical instruments, painting of outbreak of 1857 rebellion in Lucknow, diorama of the attack on the Residency, translates of the battle scenes at Alambagh and Sikandarbagh, swords, shields, guns, war rifles as part of the exhibits. However, due to dampness, the basement is under construction and will remain closed to the public until the next financial year, that is 2019. Abhi ye khul gaya hai. The museum, under the management of the Archaeological Survey of India, organizes heritage walks and museum tours and has a 15-minute documentary on the Residency and its historical relevance. It also organizes events on national holidays like Independence Day and Republic Day for school children. तो आप ये कैनन देख सकते हैं, इसका बाहर से ऐसा दिखता है. ये यहाँ पे एक पिलर है. Next is Taj Museum. Taj Museum in Agra. The origin of the Taj Museum goes back to 1906 when it was established at the instance of Lord Curzon, Viceroy of India 1899 to 1905, in 2 hexagonal rooms on the west side of main entrance gate of the Taj Mahal. Further, Khan Bahadur Maulvi Zafar Hussain, Honorary Curator and Superintendent, Archaeological Survey, Northern Circle, Agra, made valuable efforts to develop this museum. The exhibits of the museum at the time include old plans of Taj Mahal, samples of the stone used in inlay work, old photographs of Taj Mahal, a few color drawings, Oman, Sanads, specimens of previous stones used in the Taj Mahal. Now, Taj Museum is housed in the Western Jal Mahal, which is a part of Taj Mahal complex. It is double-storied building having a quadrangle projection outside in the center of the middle of western wall and is built on a raised platform. Presently, the museum galleries are upgraded accordingly with a view to highlight each subject.
ये ताज म्यूजियम से आप कुछ प्लान्स देख सकते हैं, जैसा कि मेंशन था उसमें ताजमहल के कुछ प्लान्स हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं पुराने। एंड दिस इज एक एरो हेड, स्पीयर हेड जो भी, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। नाउ दिस वर्चुअल एक्सपेरिमेंशियल म्यूजियम वाराणसी। Virtual Experiential Museum is a specialized museum in Varanasi. It is located in Man Mahal structure from the 16th century. The eastern facade of the building faces the river. This museum was inaugurated on February 19, 2019 by Prime Minister of India. Before being converted into a virtual museum, it was an information center. The museum showcases different cultural aspects of the city through the digital medium. The ambience of a street flows seamlessly as the viewers moves from one section to another. There's a laser light show about the mythology and history of the river Ganga, and guests can also engage in virtual activities such as offering diyas or ringing bells in the river. Other important things to see in this museum are wooden toys, metal products, stone craft, and a puppet show Ramlila. Some essential aspects of Kashi are illustrated here, which makes an interesting place to visit. There's also an observatory made by the son of Raja Mansingh, Savai Jai Singh, on the terrace of Man Mahal to calculate astronomical and astrological data. So these are few exhibits from Virtual Museum Varanasi. ये आप राइट साइड की इमेज में एक लेजर शो भी देख सकते हैं ऑन द राइट कॉर्नर इमेज। रामनगर फोर्ट म्यूजियम वाराणसी। वाराणसी में ही ये रामनगर फोर्ट म्यूजियम भी है। The museum is known as Saraswati Bhavan. The museum is in what used to be the Darbar Hall or the public audience hall of the fort. It is well known for its unusual and rare collection of American vintage cars, beveled sedan chairs, ivory work, medieval and silver brocaded royal palkins in the shape of a lotus flower. It has elephant saddles carved out of silver, jewelry, costumes made of kimkhwa silk, that is the finest product of weavers of Varanasi. An impressive armory hall with swords, old guns from Africa, Burma, and Japan. The old armored matchlocks, ornate hookahs, daggers, portraits of Maharajas, black musical instruments which have turned white because of neglect of maintenance, and there is a rare astronomical clock. This clock shows not only the time but also the year, month, week, and day, and the astronomical details of the sun, moon, and other planets. This clock was made in 1852 by the astronomer at the court of the Royal Palace of Varanasi. In addition, manuscripts, especially religious writings, are housed in the museum. Many books illustrated in the Mughal miniature styles are also part of the collection. There are 535 illustrations expressing Islamic ethos, which each having a decorative border with ornate floral designs or cartouches. काफी इंटरेस्टिंग कलेक्शन है रामनगर फोर्ट में। ये देखिए रेयर गन्स हैं, विंटेज कार्स हैं। जो रामनगर के राजा थे उनको कार का बहुत ज्यादा शौक था, तो आप ये कार देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। नाउ फ्रीडम स्ट्रगल म्यूजियम इन मेरठ, शहीद स्मारक, it is also known as Shahid Smarak. Government Freedom Struggle Museum was established in 1997. It is located in the Shahid Smarak compound on Delhi Road, about 6 km northeast from the city railway station and at a distance of 200 meters from the Delhi bus station. Visitors can stay in various guest houses, private lodges, and hotels. The museum main aim is the collection, preservation, documentation, exhibition of cultural property, and to make available to educational activities as well as creation of awareness about our glorious past. Some postal stamps, pictures, postcards, memorial coins related to the events of 1857 and later coins are also in the collection of the museum. The museum is in the developing stage and efforts are being made to collect more specimens. The museum organizes educational programs such as lectures, seminars, competitions related to history, culture, philosophy, the freedom struggle, and religion. It also aims at coordinating with other cultural educational organizations for disseminating Indian culture and particularly the events related to the long run freedom struggle of India. तो जैसा कि इसका नाम है गवर्नमेंट फ्रीडम स्ट्रगल म्यूजियम, ये उसी थीम पर बेस्ड है। यहाँ पे आपको ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका एक पूरा लिस्ट है जिन्होंने जो शहीद हुए, उसके साथ साथ ये 2 फोटोग्राफ्स और आप देख सकते हैं यहाँ पे। स्टेलर चिल्ड्रंस म्यूजियम ग्रेटर नोएडा, ये
एक चिल्ड्रंस को डेडिकेटेड म्यूजियम्स है जहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज के थ्रू चिल्ड्रंस और उनको इंगेज करके दे ट्राई टू एजुकेट एंड एंटरटेन द चिल्ड्रंस. स्टेलर चिल्ड्रन म्यूजियम इज अ मेंबर ऑफ दिस इज उसका बैकग्राउंड है ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. At the Stellar Children's Museums, we engage children and families in exciting experiences that instill an appreciation of our environment, develop foundational skills, and ignite the thirst for learning. The museum is a welcoming, safe, imaginative, child-centered learning environment that supports diverse families in nurturing their children's creativity and curiosity. We believe in the intrinsic value of play and provide opportunities for experiential learning and multi-sensory object-based exploration. Through our educational play-based exhibits and programs, we focus on key development areas like gross and fine motor skills, sensory awareness, social emotional learning, problem solving, and language and literacy. Our educational focus is built on the theories about open-ended opportunities. So this is something about Stellar Children Museum. आप इसको पढ़ सकते हैं. I don't want to go into detail from here. So they have different kind of galleries invented. इसमें बच्चों को involve करके they try to make them invent things, build it, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, create it to create, live it, splash it, etc. etc. ये आप देख सकते हैं कुछ वहाँ पे बच्चों को किस तरीके से एक इंफोटेनमेंट की थीम पर उनको सिखाने की कोशिश की जाती है. Now Regional Science City लखनऊ, ये इसके let's go to the objectives directly. It is getting very slow. So ये जो रीजनल साइंस सिटी है conceptualized, designed and developed by the National Council of Science Museums, an autonomous institution functioning under the Ministry of Culture, Government of India. The Regional Science City Lucknow is the new addition to the NCSM family. It is one of the satellite units of National Science Center, Delhi. The Regional Science Center has been upgraded to Regional Science City and inaugurated on 21st September 2007. It's a pioneering institute engaged in the popularization of science in the state of Uttar Pradesh since 1989. The council operates through 27 science centers, museums all over country. Regional Science City Lucknow is one of them. The center, since its inception, has received more than 31 lakh visitors. The Regional Science Center was the first stepping stone for the beginning of the enjoyment of interactive science learning to Lucknow. The upgradation of the center to the Regional Science City developed recently is certainly going to usher in a new wave of learning science in a non-formal mode and in a truly interactive ambience. The express objective of the Regional Science City Lucknow is to create scientific awareness and temper among the students and public, and to supplement formal science education and create interest in science among the students of the region. Curiosity and ability to ask questions is one of the most important features of the distinguished man from other species. It's a process through which man try to understand nature through ages. It has yielded great results and led to the development of science and technology, the benefits of which the modern society is reaping. So आगे चलते हैं. These are the few objectives Regional Science City के हैं. This is learning to do, learn through fun. आप इसको पढ़ सकते हैं. हम काफी स्लो चल रहे हैं. तो ये कुछ उसकी वेबसाइट से मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है. इसको जूम आउट करके देख सकते हैं. यहाँ पे थीम पार्क भी है, ये आर्कोलॉजिकल, प्रीहिस्टोरिक पार्क, साइंस पार्क. There are various activities in they are involved. Now this is very interesting Imperial Wax Museum that is in Agra, where you can find the wax statues of various celebrities from India and abroad. ये काफी recent है. अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये Mr. Bean, Trump and Putin, you can see. Now this is Rail Museum, Gorakhpur. Railway Museum is a must-see tourist attraction in Gorakhpur for people of all ages, especially kids. Located near golf course, Rail Museum, through its exhibits, tells the history of North Indian Railway. For that, several old coal-running trains and demo trains are put up on display at this popular museum in Gorakhpur.
Besides, heavy machines and engines are also there to tell the history of the world's largest rail network. Among all exhibits, Lord Lawrence's steam engine is the major highlight of this renowned tourist attraction in Gorakhpur. This engine was built in London in 1874 and was important to India through the sea. It is also the first engine that was used by the North Indian Railway. Apart from this, there is also has a gallery which exhibits uniform worn by railway man at different times, clocks, furnitures, library, photo gallery, and much more. Adding an altogether a different charm in the uniqueness of the major tourist site is Gorakhpur is toy train. तो ये पूरा एक म्यूजियम है that is dedicated to Northern Railway and maintained by Northern Railway. यहाँ पे आपको रेल ट्रेन की फेरीज मिल जाएंगी, टॉय ट्रेन्स होंगी, आप देख सकते हैं. ये रेस्टोरेंट को भी पूरा एक तरीके से ट्रेन की थीम पर ही रखा गया है. And there are very beautiful train exhibits. It's a very interesting place to visit actually. And that's it. Thank you so much. I tried to complete it in 1 hour. That's why I have to skip few things. Hello. So thank you, thanks a lot. Now I just want to say that this is actually a really beautiful journey of all the museums in Uttar Pradesh. We know only the few museums which are on the archaeological sites such as the Sarnath. But now I request to all the participants, if you have any questions, then please, most welcome. Yes, you can click the stop presenting. Rawatji, you can click on the stop presenting. One second. Just a moment. Okay, find it. Yes, sir. Is there any questions? Then please you can ask. I request to all the scholars, if you have any questions, then please ask now. I thought that there is no any questions. यहाँ पर कोई चैट बॉक्स में भी कुछ सवाल नहीं है और हमारे स्कॉलर्स जिनको भी कुछ सवाल नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपने जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया, यानी शुरुआत जो आपने की व्हाट इज म्यूजियम, वहाँ से लेकर के हमारा जो ये जर्नी शुरू हुआ, तो अराउंड 18 म्यूजियम जिसके बारे में आपने बताया, मथुरा म्यूजियम, फिर उसके बाद वहाँ का जो आर्ट है और वहाँ जो ब्यूटीफुल स्कल्पचर जो रखे हुए हैं, बहुत ही सुंदर, जो हमने अपना एमए हिस्ट्री करते समय भी जिस बुद्ध मूर्तियों के बारे में पढ़ा था, जो हमें यहाँ पर देखने को मिली आपके इसमें. देन पिपरवा म्यूजियम, जहाँ एक्सकैवेशन और उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्ट्स रखे गए, राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, वहाँ से लेकर कुशीनगर और कई सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स. देन सच एज सम मोस्ट दिस एज पांचाल म्यूजियम, जिसके बारे में हमने सुना नहीं था कभी, मगर आज आपकी वजह से ये जानकारी मिली. देन वन ऑफ द मॉडर्न, जिसमें कई सारी नई फिगर्स के साथ, जिसको 1857 वॉर और उसके साथ जो बनाया, सो झांसी म्यूजियम एग्जिबिट्स आपने उसके बारे में बताया. देन दिस ताज म्यूजियम के बारे में जो बताया आपने, तो सुना तो था ताज म्यूजियम इस तरह का है, बट देखा पहली बार आपकी वजह से. देन मीरत म्यूजियम, जिसके बारे में भी आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की. दिस स्टेलर म्यूजियम, कभी मैंने उसका नाम सुना नहीं था, बट यहाँ पर आज आपकी वजह से ये जानकारी मिली. एंड देन रीजनल साइंस सेंटर एंड द रेलवे म्यूजियम. सो इट्स रियली अ वंडरफुल जर्नी ऑफ ऑल द म्यूजियम्स. मुझे बड़ी खुशी हुई और आपने यहाँ पर हमारे साथ ये जो जानकारी साझा की, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. यहाँ तो सवाल जब आपने इतना ब्यूटीफुली शुरुआत से लेकर के और सारी कंसेप्ट्स आपने बिल्कुल क्लियर कर दी, तो इसलिए किसी को कुछ सवाल भी नहीं है. So thanks a lot again to you and thank you so much sir. आपने मुझे अवसर दिया. मैंने कोशिश की कि एक छोटी सी कोशिश थी, उसमें मुझे बीच में काफी चीजें स्किप करनी पड़ी, because I found it very important that if we don't skip then this talk will go very long. So I tried to keep it minimum and as clear as possible. And thank you very much. And whatever you are doing is remarkable. And I just wish you all the luck. And thank you so much. Thank you. Thanks a lot. And once again, just I humbly say to that, we'll keep in touch and